अस्सलाम वालेकुम। ये बच्चा माशाल्लाह तैयार है, कोशिश कर रहा है कि सेल्फ हैचिंग की, लेकिन ये थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मैं इसे तकरीबन 2.5-3 घंटे से मैं इसको ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। तो अब मैं इसको थोड़ा हेल्प आउट करूँगा। अच्छा, ये बड़ी आहिस्तगी का काम है, बेइंतहा नज़ाकत के साथ। ये मैं आप देखेंगे, ये जूस कर रहा हूँ गार्डन बिट। मॉलकन काकटू का एग है, चिक है ये माशाल्लाह। और दूसरा जो है माशाल्लाह वो सेल्फ हैच हो गया था, और दूसरा जो है इसको की थोड़ी सी प्रॉब्लम इसको हो रही है। तो अल्लाह के हुक्म से हम इसको हेल्प आउट करेंगे। आवाज़ आपको आ रही होगी इस बच्चे की भी। डेज कंप्लीट हो चुके हैं। बेइंतहा नज़ाकत का काम है ये। जल्दबाजी, ताकत हरगिज़ नहीं। आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन में आपको 24 आवर्स की ड्यूटी होती है आपकी, एक तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपको करना पड़ जाती हैं खुद से। यहाँ पर मेरे ख्याल में इसका एक नोस्टर जो है शायद बंद है।
पहले हम इसको रिमूव करेंगे ताकि इस बच्चे को सांस लेने में आसानी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु
शुक्र। से हम अब अल्लाह का करम है, साथ खैरियत के ये अल्लाह की मदद से इसे हम अभी थोड़ी देर इन्क्यूबेटर के अंदर ही रखेंगे। खास तो में आप देखिएगा, जज़ाकल्लाह खैर।